हरिओम। नमस्ते। ये प्रकृति शायद हमसे कुछ कहना चाहती है। ये नदियाँ, ये पानी, ये पेड़, ये पौधे, ये समुंदर की लहरें, ये बारिश का पानी, ये नाचते मोर, ये कुछ कहना चाहते हैं। ये प्रकृति हमें कुछ कहना चाहती है। I, Neelam Malik, on behalf of Arya Global family, welcome you to this unique online celebration for the first time in the history of Arya Gurukul, the World Environment Day 2020. It's truly an irony that we are all sitting locked down and we are celebrating this by giving an ode to Mother Nature. But let me tell you, I'm so happy that Mother Nature is healing itself. I'm so proud of my students. I'm so proud of my whole team that they have remained at home in these difficult times and yet they are studying, they are learning, they are allowing Mother Nature to help itself. Not only that, they are writing songs, they are giving music. The whole art team has prepared a beautiful video giving lyrics and music all in house, which is going to be launched today. And this is called Teri Raksha. How else, what better way could we have to celebrate Environment Day? Definitely, our children have really truly become 21st century learners. Not only that, they have held the hands of the teachers too. Those who today have become from school teachers to cool teachers. Yes, parents, school teachers. They are now using all digital platform to teach, right from Microsoft Teams to Pedex to Streams, Kahoot, Flipgrid, what all. And definitely they are engaging students. And this is not only for scholastics, it holds true for post scholastics also. Music is taught through Swardhara app. Fitness program is taught through the Microsoft team. And it is amazing how parents and students both are getting engaged. Here, I would like to thank all the parents for their support and intervention because without this, it would not have been possible. They have, as parents, displayed the highest type of parental engagement that we could ever wish for. So, today, as we celebrate the World Environment Day on Teams app live, in today's program, we will be celebrating nature to its fullest and give it all the attention that it is craving for. The, the children and the teachers have performed dances in honor of the nature. They have sung songs in honor of nature. And as I told you, they even have made their all in-house video. Our media department, media team has done a wonderful job. So, in the last few days, I have been really thinking, and I personally feel that those two words which I have been using so much, Vasudhaiva Kutumbakam, has really come alive. The whole world, the whole universe is our family. Every small thing that we do or any act of ours affects the whole, not only the world, also the universe. These two words speak so much volumes. As we are locked down, we find people going to the orbit towards the moon. Definitely, it's a whole one big family. What we really need to learn is to collaborate, to coexist. Only collaboration will bring coexistence because we are dependent on nature. Whether nature is dependent on us, that is
something to be thought of. So, as 21st century learners, both our teachers and students are truly on the proper path, I should say. In fact, our students have shown immense collaboration and effort in these last few days. They have expressed themselves in various forms, all digitally. Self awareness and empathy also will soon follow. This digital platform has taught both the teacher and the taught many things. I am most excited to share today that we have created another breakthrough. As I told you, the music, art, and dance teachers have collaborated and prepared this whole video of which is called Teri Raksha, which will be released today and launched through this Teams app live. Later on, it will be launched and premiered in YouTube. Please keep a watch on it, and also through Facebook and other digital platforms. So we at Arya Gurukul are ready. Are you ready? And we welcome you all to celebrate with us the World Environment Day 2020. But yes, never forget, always remember, हम होंगे कामयाब. Namaste. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. Today, 5 June is celebrated as World Environment Day. It is United Nations principal vehicle for the awareness and action for protection of our environment. So today, we, the students of Arya Gurukul Nandeli, are going to show the importance of environment through a dramatical performance. So be seated for this thrilling experience. आ गए हैं हे नए रंग में, नए रूप में, नए दौर में, नए सदी में, नए वक्त में बात पते की समझाने आए. क्या समझाने आए भाई, क्या समझाने आए? तो आइए हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस पर्यावरण दिवस पर एक नुक्कड़ नाटक. जमुरे जी उस्ताद. आज क्या दिखाएगा? नाटक दिखाऊंगा उस्ताद. नाटक. नाटक? किसका नाटक? क्या राजा का या राक्षस का? ना राजा का ना राक्षस का. तो फिर किसका नाटक दिखाएगा जमुरे? किसका? हाँ, पर्यावरण का महत्व मालिक, पर्यावरण का महत्व. तो आइए दिखाते हैं आप सबको हमारे नुक्कड़ नाटक द्वारा पर्यावरण का महत्व. आपने देखा नहीं, गर्मी का मौसम अब लगभग असहनीय हो गया है. हाँ, आप सच कह रही है. कल रात मेरे माता पिता भी इसी घटना पर चर्चा कर रहे थे. क्या आप इस जलवायु परिवर्तन व मौसमी बदलाव के पीछे का कारण जानते हैं? निसंदेह, अनडाउटली ये सब उस पर्यावरण क्षरण के कारण होता है. भारी वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधनों को जलाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग अमृत है.
पहले हम इसके बारे में चर्चा किया करते थे, अब हमने इसके प्रभावों को देखना शुरू कर दिया है। अगर इस प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य बहुत गंभीर होने वाला है। जीवन की परिस्थितियां असहनीय हो जाएगी। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? इस अत्यंत गंभीर समस्या का एकमात्र समाधान बड़े पैमाने में लोगों की भागीदारी है। हमें वनगमन ड्राइव और जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर रोक लगानी चाहिए और यही समाधान हमें एक भरी धरती और स्वच्छ धरती दे पाएगा। लेकिन ये कैसे संभव है? लोग समान रूप से पर्यावरण के प्रति लापरवाह है। वे स्वयं पर्यावरण के कानूनों का उल्लंघन करते हैं और प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं। ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव हो सकता है। सरकार और हमें सख्ती से काम करना चाहिए। हमें उनका पूरा सहयोग देते हुए कानूनों का पालन करना चाहिए। अन्य वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध निश्चित रूप से वे होंगे। Why would anyone want to die? क्या वो जीना नहीं चाहते हैं? इसके अलावा हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और बेहतर ग्रह छोड़ना चाहिए। We should leave a better and green earth. सभी की जरूरत है लोगों का उचित संवेदीकरण, क्योंकि पर्यावरण ही जीवन का आधार है। हरियाली की महिमा को समझो, वृक्षों को तुम पहचानो, ये मानव जाति के जीवन दाता, इन्हें अपना मानो। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। Save environment, save greenery. स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। Save water, save life. God has blessed us with a green environment. If we lose blessings, we lose a healthy life. So it's time we work together on the theme of save environment. तो देखा मालिक, हमारे नुक्कड़ नाटक द्वारा कैसे हमने लोगों को समझाया पर्यावरण का महत्व। That nature is art of God. As an artist, I appreciate every creation as a form of art where God takes the place of an artist. On this land of Almighty, the work of visual art is to reveal the relation between man and his environment. So, revealing the beauty of love between man and environment, I, Dipali, along with Tanishka, Akash and Lakshay, we are here to present our piece of composition in the form of posters on this World Environment Day. Now we can see a tree growing, but half of the tree is dead and another half is growing with joy and prosperity. Down below, we can see the humans, age evolution from a child to the old man. Now, the dead part of the tree is signifying the problems of human being, present on the clouds, the coronavirus and cyclone Amphan. The thunderstrikes are sign of danger and punishment and are leading to crisis and then to a decline of human life, which is also presented by the adult man getting older. Now, on other side, we can see the tree has grown with all joy and prosperities, and the growth of child to be an adulthood is signifying the growth of earth. The clouds are presenting the repair of earth. Like in current situation, our earth's ozone layer has started to repair with water bodies getting clean. The rain is a sign of a blessing for our earth. Now, from the dead body, the footsteps getting lighter are presenting that if humans
are not there, carbon footprints will be reduced. The problems which are occurring in our environment are due to the past activities of our humans, which are getting paid back. And so, I would like to end with the slogan, what you sow, so shall you reap. I don't want to protect environment. I want to create a world where environment does not need protecting. Hari Om and Namaste. I Pallavi Das, studying in 9th C, wishing you all a happy Environment Day. So, what are you looking for? This? Oh yes, these are two of the crafts I have created. What is the first thought when you see this? I am sure you must be missing one of your trip to the beach, as I am. The beautiful glimpses of environment. Environment is not just a word. Our environment is our life. It directs our life and determines our proper growth and development. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our environment. Everything around us, including ourselves, is a part of environment. Our human society, education, technology, minds are also a part of environment. Here you can see the types of environment: natural, man-made, inner, outer, psychological, geographical, business, social, cultural, and many more. What 2020 brought for us? Corona? Yeah, but it has even brought for us many more lessons. Like if we humans get locked in our house as we are, then the nature starts replenishing itself. Carbon dioxide emissions are dropped. The canal water is getting clear. Dolphins and fishes can be seen on the shores. The animals are enjoying this freedom. It is not inevitable that the cleaner air and water we are witnessing have to be temporary and only associated with the economic meltdown. Taking care of environment is not an obligation in India, but as an Aryan of Arya Gurukul, it is our duty to aware other people and make them understand how environment is important and to let us all bring about a change. But how can we do it during lockdown? And we get the answer as: do full use of creativity, the one which is your hobby and the one which you are going to start. Try out everything, all the things about which you got an idea today and new ones which you are going to get in the future. And yes, use the main weapon. Main weapon? Social media. Parents won't allow phone for games, but they would allow for this better cause. So, go for it, Aryans. Stay safe, stay at home. Thank you. Environment Day, I would like to showcase my poster on the impacts of COVID-19 pandemic on our environment. So friends, what is environment? Environment is the surrounding or the condition in which the living organism operates. So let's talk about our poster. In our poster, there is a plastic bottle floating inside the water bottle, in which the pollution is trapped inside the plastic bottle. In the passage of time, the pollution should remain intact inside the bottle and should not increase anymore. The clean environment we are enjoying currently only be a short term without fundamental rights. The pandemic has also impacted on every strata of our life, which is waste, energy, wildlife, and carbon dioxide. This symbolizes the women and the birds symbolize the biodiversity in our country. I would like to conclude with Mahatma Gandhi's quote, which is, the world provides for everyone's need, but not for anyone's.
some methods are given. This man is telling some methods by which we can save Earth. As you can see here, we can use solar energy, here wind energy. By solar energy we can use wind energy, we have to save water, and here we can grow plants by most of the times we use vehicles, so instead of that we can use cycle for that. And here as you can see bulb, so I have made a bulb to show electricity, as you can see here. So it tells that we have to save electricity also. So this was my poster. To showcase a small creation by me, through which I have given a try to give a perfect impact to the viewers about the current scenario of our dear environment. Keeping in mind the theme, Time for Nature, I have depicted the scenario of our dear environment on this piece of paper. The background shows mixed emotions. On the left, the lungs are representing vast and also telling the viewers about the two contradicting situations, where at one side stands the beautiful greenery, followed by the polluted surrounding due to the harmful smokes released by cars and other machines. The right top shows how perfectly looking green-blue earth is in from inside due to the hazardous steps taken by the human living there. Lastly, giving a solution to this scrambled expression where following Go Green can save our planet from its end. फिर से हम लाएंगे नई सुबह, शीशे सा पानी नीला आसमां, चारों तरफ हो हरियाली जहाँ, जंगल में पंछी भी गाए सदा। तेरी रक्षा का प्रण है लिया, अब मुस्काएगी अपनी धरा। तेरी रक्षा का प्रण है लिया, फिर मुस्काएगी अपनी धरा। सुफला सुंदर हर कण कण में, मनु न भगिरी ग्रह जल चारों दिशा में, सुजलाम सुफलाम सुंदर हर कण कण में। स्वार्थ में ही भूल भ्रष्ट खुद को किया, हमारा था कसूर नष्ट तुझको किया। स्वार्थ में ही भूल भ्रष्ट खुद को किया, हमारा था कसूर नष्ट तुझको किया। ममता और क्रूरता में अंतर बतला दिया। तेरी आशा का प्रण है लिया, फिर मुस्काएगी अपनी धरा। तेरी रक्षा का प्रण है लिया, फिर मुस्काएगी अपनी धरा। वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम्।
फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। अंधेरों में हम घिरे हुए, अंधेरों में हम भागे हुए, अंधेरों में हम घिरे हुए, अंधेरों में हम भागे हुए। पल पल हर पल हम जिए इतने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। Hariom, I'm Sneha from 8th grade here, elaborating a little about my musical journey in school on this auspicious day. Glad to share with you all that we'll be composing a song on Environment Day too. My musical journey in school basically started when I was in junior KG in Little Aryans. I've been into music from a very young age. I didn't even know if I was a good singer, but I knew that I liked to sing. I've had many hobbies where at first I was all excited about them, but later got bored of them. Singing has never been one of them. It holds a very special place in my heart. Learning to sing in Little Aryans was all fun and cool until I got promoted to first grade to Ari Gurukul. That's where the journey actually began. I was shy and quite kind, barely used to talk to anyone, but through music I gained my confidence. It has been such a great pleasure to be a part of AG Choir Group. I've transformed into a whole lot new person. I was too shy to perform on stages and sing on mics, but our dearest music teachers helped me overcome that fear. And not only that, but because of them, I got to be a part of big events and perform there. Because of them, I could achieve all I have today, and I'm so thankful to them for that. I've been to several competitions and in fact won most of them. Being a part of AG Choir Group has done so much for me. I can sing so much better now. In fact, I'm so much of a better person than I was back then. Thank you. दुनिया की परवाह है हमें, बेहतर कल की दुआ है हमें। रोशन जो जहाँ था कभी, रोशन ये रहे ना भी। आओ हम चले पेड़ों से बातें करें, इस धरती को सजोने। आओ हम चले, खत्म ये तो खत्म हम भी है, जहाँ अपना बसा इनसे है।
खत्म ये तो खत्म हम भी है, जहाँ अपना बसता इनसे है।
student of Arya Gurukul Nandedi, is going to present a mono act in front of you on the topic of World Environment Day. Lockdown gives the environment a chance to rejuvenate itself. नासिक में चीता देखा गया, इस्तांबुल में डॉल्फिन्स देखे गए और हाइफा में जंगली सूअर देखे गए। इस समय न जाने कितने सारे जंगली जानवर हमें शहरों की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, पर हमारे पर्यावरण के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। जब से इंसान घर बैठा है, प्रकृति अपने आप को संवार रही है। न जाने मनुष्य ने कितना प्रदूषण किया हो, प्रकृति ने वो सब झेला है। और अब जब मनुष्य प्रदूषण नहीं कर सकता, तब प्रकृति अपने अजूबे दिखा रही है। ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ रहे हैं, ओजोन लेयर का छेद धीरे धीरे कम हो रहा है और विलुप्त हो रही जातियाँ एक बार फिर उभरने लगी है। कहते हैं ना, रिवर इज लाइक लाइफ, इट कीप्स फ्लोइंग। पर इसी नदी को हमने कचरे और कूड़े से भर दिया। अब साफ नदियाँ बहने लगी है, उनमें ना कूड़ा ना कचरा, सिर्फ स्वच्छता। वो जानवर जिन्हें हम विलुप्त हो रही जातियाँ कहा करते थे, वह भी फिर दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ विलुप्त हो रही जातियाँ ही नहीं, बल्कि कई सारे जानवर जो सिर्फ जंगलों में देखे जाते थे, वो भी आजकल शहरों की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। अब मनुष्य पर्यावरण दूषित नहीं कर सकता, ना ही वो हवा को दूषित कर सकता है, ना ही जमीन को और ना ही पानी को। प्लास्टिक बैन होने के कारण हमने पर्यावरण की सुरक्षा में एक कदम तो बढ़ा ही लिया था। आज 5 जून यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हमने कई सारी योजनाएं तो देख ही ली है, जैसे कि सीवेज मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट सेपरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट। तो आज 5 जून को हम ये प्रण लेते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसलिए हम इन योजनाओं में अपना पूरा योगदान देंगे और हम हमेशा पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। हर एक पक्षी गीत है ये गाता, हर एक पक्षी गीत है ये गाता, पर्यावरण से रखो हम जैसा नाता, पर्यावरण से रखो हम जैसा नाता। वही करो जो पर्यावरण को भाए, वही करो जो पर्यावरण को भाए, फिर देखो पर्यावरण कैसे अजूबे दिखाए, फिर देखो पर्यावरण कैसे अजूबे दिखाए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। Welcome water splendor. Offer a cool, thirst quenching presence. The love-lone lady stares longingly in skies. Her pained heart she spread on moist paths under tamal shades. Her eyes awake painful melodies. Buds of bakul she read, while in lawns lute of union played. Bring in your string instrument, it'll too beat in rhythms of frolic dances. Jingles bracelets, jingles waistlets, jingles anklets in charming harmonies. नमस्कार, हरिओम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रकृति और नृत्य के संबंध के बारे में बताऊंगी। नृत्य प्रकृति के हर कण में मौजूद है। भगवान शिव को नृत्य का जनक माना जाता है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाथ से जब शिव प्रकट हुए तो उनके साथ रज, तम और सत, ये तीनों गुणों का भी जन्म हुआ। यही तीनों गुण शिव के त्रिशूल यानी कि 3 शूल कहलाए। शिव 2 प्रकार के तांडव करते थे।
पहला, जब वो गुस्सा होते थे बिना डमरू के तांडव नृत्य करते थे, लेकिन दूसरे तांडव नृत्य करते समय जब वो डमरू भी बजाते थे तो प्रकृति में भी उसके आनंद की बारिश यानी वर्षा ऋतु होती थी। नृत्य एक ऐसी सार्वभौम कला है जो मानव जीवन के साथ ही अस्तित्व में आ गई थी। नृत्य मानवीय अभिव्यक्ति का रसमय प्रदर्शन है जिसमें करुण, अहंकार, विभाव, भाव, अनुभाव इत्यादि रसों का समावेश देखने को मिलता है। नृत्य मनोरंजक तो है ही, साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन भी है। अगर ऐसा न होता तो कला की यह धारा पुराणों और श्रुतियों से होते हुए धरोहर के रूप में हम तक प्रवाहित ही न होती। यह कला देव, दानव, मनुष्य और पशु पक्षियों को समान रूप से प्रिय है। इसीलिए भगवान शिव को नटराज कहा गया है। उनका पंचकृत्य से संबंधित नृत्य सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार का प्रतीक माना जाता है। लोक नृत्य को आम देहाती स्त्री पुरुष लोकवाद्यों का सहारा लेकर करते हैं। यह वस्तुतः प्राकृतिक नृत्य है जो कि प्रकृति से ही जन्मा है। The iconographical attributes of Shiva are the serpent around his neck, the adorning crescent moon, the holy river Ganga flowing from his matted hair, and the third eye on his forehead, the Trishul or trident as his weapon, and the Damaru. 5 classical dances of India are considered to be the mystic manifestation of the metaphysical elements of nature, that is called Panch Tattva in the human body. These includes Odissi, the element of water, Kuchipudi, the element of earth, Mohiniyattam, the element of air, Bharatnatyam, the element of fire, and Kathakali, the element of sky. So here I am ending my speech with some positive note to relate the nature and dance. Hari Om. 5 classical dances of India are considered to be the mystic manifestation of the metaphysical elements of nature, that is called Panch Tattva in the human body. These includes Odissi, the element of water, Kuchipudi, the element of earth, Mohiniyattam, the element of air, Bharatnatyam, the element of fire, and Kathakali, the element of sky. So here I am ending my speech with some positive note to relate the nature and dance. Hari Om. এসো শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর, আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গ সুধা, বিরোহিণী চাহিয়া আছে আকাশে শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর। সে যে ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে, কমল কুঞ্জ পথে সজল ছায়াতে, ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে, কমল কুঞ্জ পথে সজল ছায়াতে, নয়নে জাগিছে করুণ রাগিনী শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর, আনো তবু
আছে আকাশে শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর। বকুল মুকুল রেখেছে গাথিয়া, বাজিছে অঙ্গনে মিলন বাঁশরি। বকুল মুকুল রেখেছে গাথিয়া, বাজিছে অঙ্গনে মিলন বাঁশরি। আনো সাথে তোমার মন্দিরা, চঞ্চল নৃত্যের বাজিবে ছন্দে সে। আনো সাথে তোমার মন্দিরা, চঞ্চল নৃত্যের বাজিবে ছন্দে সে। বাজিবে কঙ্কন, বাজিবে কিঙ্কিনি, বাজিবে কঙ্কন, বাজিবে কিঙ্কিনি। ঝঙ্কারিবে মঞ্জির রুন রুন, শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর। আনো তবু তাপহরা ত্রিসাহরা সঙ্গ সুধা, বিরোহিণী চাহিয়া আছে আকাশে শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর। So, Hariom students, so you have continuously watching videos performed by teachers, students about Environment Day. But have you thought about how environment exists in a dancer and a human being? So I will tell you, there are 7 chakras in the body of a human being which are correlated with the environment. And I would like to tell you that the chakras are the focus point which releases the amount of energy and the strength which the body requires. From that, 4 elements are related, 4 chakras, that are water, fire, earth and air. So now you will be thinking how a human body uses it. A dancer, whenever dances, he dances on the floor, so he maintains the balance of Bhumi, that's earth, and he plays with the air, like he controls the breath. He flows, like he plays with the air, moving here and there, flips, doing flips. So he's controlling the air, the second element. Then body, you will say the water element. The water element is the blood. Blood itself is a water. So whenever he moves, the strength of blood, yeah, you can say the element of water, it moves along with the dancer and it produces the strength and gives his power to the dancer to move very easily from here and there. So this is how a human body consists of an environment, or you can say elements of environment. So now there will be a small video performed by students. From before that, Aryan Chit, he has created something different, and now we'll be watching that video. Okay, thank you. फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके
फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। पल पल हर पल हम जिए कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे। Dear parents, teachers, and my dear students, Namaste. If only I had words to express the joy that I feel right now. It was a truly mesmerizing experience, enriching effort, with so much of effort from our children. This is our first remote celebration, an online celebration of the World Environment Day 2020. So much of love and respect towards the environment was expressed through the medium of art, dance, music. I think the whole next generation they have got this message. And I'm sure Mother Nature must be smiling to her fullest glory. I thank each and every member of my team
for putting up such a wonderful program. Believe me, this is an effort which we have seen for the last 15 days they have been working on this. And the students were so wonderful, really amazing. And the synchronization that they had with each other was so beautiful. Parents, thank you so much for giving us these wonderful children. Parents, we are ready for the school, remote and offline, both in school, offline school, and remote school, online school. Our SOPs are all getting ready. We are waiting for the government directives, government announcements, and guidelines. And I know that the children are waiting to come back. Till such time, we will meet remotely. Our team of teachers and other staff members are working rigorously to ensure that you do not miss your studies. Learning must go on. Thank you, parents. And my dear children, we are looking forward to many more such virtual interactions in future. Till then, stay home, stay safe, stay healthy. And of course, always remember, हम होंगे कामयाब. Namaste and Hari Om.